बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी हैव डन टिल दिस पैराग्राफ till here. That was lecture 3 part 1. Today this is lecture 3 part 2, and today we will finish chapter 2, rest of the passages for Urdu translation exercise. In this lecture we will inshallah also do unit 3 poem Try Again at its exercise. So you have to ready your loose sheets and hold your pen. Giving good luck gifts. It is traditional practice for adults to give children little red envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year. यह रवायती अमल है बड़ों के लिए कि वो बच्चों को छोटे सुर्ख जवाबी लिफाफे देते हैं जो कि भरे होते हैं पैसों से, ताकि ये अलामत हो दौलत की और खुशहाली की फॉर द आने वाले साल के लिए. इट इज़ ऑल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स. ये आम है कि बड़ों को फॉर द एल्डर्स बड़ों को टू प्रेजेंट दिए जाते हैं रेड पैकेट्स, सुर्ख लिफाफे. टू अनमेरिड मेंबर्स, गैर शादीशुदा अफराद को ऑफ द फैमिली ख़ानदान के. एनवलप्स आर नॉट टू बी ओपन, जवाबी लिफाफों को नहीं खोला जाता अनटिल, हत्ता कि द रेसिपिएंट हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, जब तक रेसिपिएंट जिसको लिफाफा मिलता है वो घर नहीं छोड़ देता ऑफ द गिवर, देने वाले का. ऑनरिंग द एनिमल्स. एवरी ईयर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज जोडियक. हर साल लिंक होता है 12 में से एक जानवरों के ऑफ द चाइनीज जानवरों के जोडियक एनिमल. दीज एनिमल्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड, इन जानवरों को पेश किया जाता है इन डेकोरेशन सजावटों में. सम पीपल बिलीव दैट, कुछ लोग ये यकीन रखते हैं, दोज बॉर्न ड्यूरिंग द ईयर ऑफ पर्टिकुलर एनिमल में हैव द कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ द एनिमल. कुछ लोग ये यकीन रखते हैं कि जो उस साल में पैदा हुए ख़ास जानवर के, उसमें शायद हो वही खसूसियात उस जानवर की. सो चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ टाइम, चाइनीज़ न्यू ईयर वो वक्त है when the family should come together, जब ख़ानदान इकट्ठे होते हैं, in order to give thanks, शुक्रिया कहने के लिए, for the year that has passed, साल जो गुजर चुका था, and reinvigorate और strengthen, कुव्वत बख्शते हैं, strengthen करते हैं themselves, अपने आप को, उनको for the coming year, आने वाले साल के लिए. So students, this was unit 2. Let's start with the question answer of unit 2. So hold up your pen and be ready for the question answers. What does Chinese New Year start? When does? Chinese New Year is determined, Chinese New Year का फैसला किया जाता है by lunar calendar according to phases of moon, which is shorter than the solar calendar. So Chinese New Year starts somewhere between January 21st and February 20th. So why do Chinese family do thorough cleaning of their houses before New Year's Day? The Chinese families do thorough cleaning, वो सफाई करती हैं मुकम्मल of their houses, अपने घरों की, before New Year's Day, नए साल के दिन से पहले, to clear out any bad luck, ताकि साफ़ किया जा सके किसी बुरी किस्मत को from the previous year, पिछले साल की, and to make the house ready, और घर को तैयार रखते हैं to accept good luck for the coming year, ताकि एक्सेप्ट किया जाए खुशकिस्मती को आने वाले साल की. Which color is not allowed and which color is encouraged in Chinese New Year? The black color is not allowed. काले रंग की ममानियत है पहनने की क्योंकि इसका ताल्लुक है मौत से. However, wearing red is encouraged. सुर्ख को पहनने को की हौसला अफजाई की जाती है, जैसा कि इस रंग का ताल्लुक है with warding of bad spirit, wedding of get rid, ताकि भगाया जा सके बुरी किस्मत को. What do decorations on the door and windows symbolize? क्या
सजावटें और दरवाज़ों पर जो सजावटें होती हैं वो उनकी क्या अलामत है? Signs and posters with the Chinese word food written on them are hanged on windows which symbolize luck and happiness. जिनका मतलब जो अलामत होती हैं खुशकिस्मती और खुशी की. What is the significance of New Year evening dinner? The New Year evening dinner is of great significance. रात का खाना नए साल का बहुत अहमियत का हामिल है. Families partake in large डिनर. ख़ानदान हिस्सा लेते हैं, फैमिलियाँ हिस्से लेती हैं लार्ज डिनर में. वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड आर सर्व. इट इज़ कंसिडर्ड, इसको समझा जाता है एज सोर्स ऑफ प्रोस्पेरिटी, खुशहाली का ज़रिया, तवील उम्री का ज़रिया, एंड फैमिली गैदरिंग और ख़ानदान के इकट्ठा होने का ज़रिया. वट डू लिटिल रेड एनवलप्स फिल्ड विद मनी एंड सिम्बलाइज? द लिटिल रेड एनवलप्स, सुर्ख छोटे लिफाफे, फिल्ड विद मनी भरे होते हैं पैसों से, सिम्बलाइज इस अलामत होते हैं वेल्थ दौलत की, एंड प्रॉस्पेरिटी खुशहाली की, फॉर द कमिंग ईयर आने वाले साल की. दीज एनवलप्स आर गिवन बाय एडल्ट, से बड़ों के ज़रिए दिए जाते हैं, फॉर टू चिल्ड्रन बच्चों को, एंड बाय एल्डर्स टू और बड़ों के ज़रिए टू अनमेरिड मेंबर ऑफ फैमिली, ख़ानदान के गैर शादीशुदा लोगों को. सो क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, what is the importance of Chinese New Year for Chinese family? Chinese New Year is of great significance of Chinese family. Chinese New Year बहुत अहमियत का हामिल है चाइनीज फैमिली के लिए. People celebrate it. लोग इसे मनाते हैं with great zeal and zest. बहुत जोश और जज्बे से. They visit each other, वो एक दूसरे के पास विजिट करते हैं, which helps to strengthen, जो उनको क़ुव्वत बख्शती है, their relationship, ताल्लुकात को, with each other, एक दूसरे को. The families come together, ख़ानदान इकट्ठे होते हैं, to give thanks, शुक्रिया करने के लिए, for the previous year, पिछले साल की, and reinvigorate, और वो क़ुव्वत देते हैं, themselves, उनको, for the coming year, आने वाले साल की. So students, let's start the exercise. Collective noun is or group noun. Noun group या noun के group का particular name होता है इंग्लिश में, that is known as collective noun. Here you will see some words: gang, crowd, committee, class, crew, audience, family. It is typical for a Chinese family dash to make 8 to 9 dishes for the dinner family. So rest of the sentences you have to solve by your own. Next is the use of must or must not. After must you will add first form. So she dash eat so much sugar, must not. Rest of the sentences you have to solve by your own. Use of present indefinite and present continuous. What is the syntax of present indefinite? Subject plus, as you have done tenses, recall your minds for the tenses. Subject plus verb first form SES plus object, use of do and does. And present continuous, subject plus is MR, verb first form ING plus object. Helping verbs is MR. So you do not like chocolate. Rest of the sentences you have to do by your own. So students, this was unit 2. That's all. Now we have to start unit 3. So first of all, you have to know that this poem, Try Again, is written by W.E. Hickson. Actually, Hickson was poet. He stressed on struggle of human beings. So students, let's start with the word meanings. First, note down or underline the words from the poem. Heed, pay attention, courage, bravery, persevere, consistent, task, object, reward, prize, patience, bearance, folk, people, person, people, prevail, dominate, galba pana, disgrace, insult, case, condition, conquer, prevail, strive, struggle, race, competition, view, sight. So let's start the poem. So first of all, tis a lesson you should heed. Tis, that is, heed, notice. ये सबक है जो तुम सीखो, जिस पर तुम तवज्जो दो. ट्राई अगेन, फिर कोशिश करो.
इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, अगर पहले तुम कामयाब नहीं होते, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो. देन योर करेज, तब तुम्हारी बहादुरी शुड अपीयर, जाहिर होगी. फॉर इफ़ यू विल परसिवियर, इफ़ यू आर परसिवियर, अगर तुम साबित कदम रहते हो. यू विल कंकर, तुम फतह पाओगे. नेवर फियर, मत डरो. ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो. वंस और ट्वाइस, एक और दो दफ़ा. दो, अगरचे यू शुड फेल, तुम नाकाम होते हो. इफ़ यू शुड एट लास्ट प्रिवेल, अगर तुम इफ़ यू वुड, अगर तुम होते हो एट लास्ट प्रिवेल, कामयाब. ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो. इफ़ वी स्ट्राइव, इफ़ वे हम कोशिश करते हैं. टिस नो ग्रेस, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है. दो, अगरचे वी डिड नॉट विन द रेस, हम मुकाबला नहीं जीतते. वट शुड यू डू इन दैट केस, इस मौके पे, इस मामले में तुम्हें क्या करना चाहिए. ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो. इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, अगर तुम अपना काम मुश्किल पाओ. ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो. टाइम विल ब्रिंग योर रिवॉर्ड, वक्त लाएगा तुम्हें तुम्हारा इनाम. ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो. ऑल दैट अदर फोक कैन डू, दूसरे लोग क्या करते हैं. वाई विद पेशेंस शुड नॉट यू, और अगर तुम वाई यू शुड पेशेंट, तो फिर तुम मुझसे मिजाजी से क्यों नहीं करते. ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, सिर्फ इस असूल को नज़र में रखो. ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो. सो स्टूडेंट, दिस वाज द पोएम. लेट्स स्टार्ट with the question answer of this poem. Hold up your pen and be ready for the writing. So, hold up your pen and your loose sheets. Let's start. What is the lesson taught in the first stanza? The lesson that is taught in the first stanza is determination. So, students, we have to start with the question answers. Yes, sorry. Question number 1. What is the lesson? What is the lesson taught in the first stanza? The lesson that is taught in the first stanza is determination. जो सबक दिया है कि पहले स्टैंजा में वो है जज्बा. It teaches us that our first failure, कि अपनी पहली नाकामी से, should not make us disappointed, कि हमारी पहली कामयाबी को हमें मायूस नहीं करना चाहिए. We should try again steadily and daringly, हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए हिम्मत से और हौसले से. We can learn from, how can we learn from failure? Failure urges us to make more daring and courageous step to get success. Our failure teaches us our weaknesses and shortcomings. How is failure not a disgrace? Failure is not a disgrace because it paves the way, ये रास्ता देती है to success, कामयाबी का, and inspires to do, और हमें मुतासिर करती है ज़्यादा काम करने पर. How many times should we try and why? किसी दिन हमें कोशिश करनी चाहिए, क्यों. We should keep on trying, हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए until we succeed, जब तक हम कामयाब नहीं होते. What should we do if we find our task hard? If we find our task hard, we should not be disappointed. We should not give up our hope and keep on trying till we are able to fulfill our goal. Give an example of struggle from your life. Ahmed is my friend. Ahmed मेरा दोस्त है. He could not pass the annual examination because he was ill. Later on, he worked hard and got an excellent position in the school. So that's all, student. This was about question answer of unit 3. Let's start exercise. Here you will see simile. What is simile? Simile is the use of as or like. In it you will see that we use similarity, one similarity and a dissimilarity of things. So on the cold winter day, under the covers I kept as snug as a bug in a rug. This simile means there are bugs in my bed. I'm cozy in my bed. I was too cold to stay in bed. Option B is correct option. Their leader was as wise as an owl. So as wise as an owl mean leader knew many things. So
Option C is correct. The leader know a lot of things. Danish threw such a temper outburst over such a tiny thing. He was acting like a baby. So correct option is Danish was acting childish. The new teacher was as sweet as apple pie. Apple is sweet, so it means the teacher is nice. Option A. The shopping center was like a three rise ring circus. Ring circus mean crowdy, busy. So option is C is correct. The shopping center was really busy. Mohsin was as explosive as a volcano when he found out his bike and been stolen. Mohsin was angry. So this is the use of similes. You have to learn more similes. Then the next topic is alliteration. What is alliteration, students? Alliteration is the repetition of same kind of sounds at the beginning of words or in stress tables. You will notice this on page 31 from your textbook, alliteration. The repetition of the same sounds or the same kind of the sounds as the at the beginning of words or a stress label, like she sells seashells by the seashore. Sure sounds. So student, you have to solve rest of exercise by your own. So student, this was unit 3, lecture 3 part 2. Inshallah, in next lecture we will start lecture unit 4. See you. Allah Hafiz. Learn it by heart.